ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाच। Prabhu, we cannot hear you. Can you unmute? Okay. Can you hear me now? Yes, Prabhu, loud and clear. Thank you. Okay. So, सर्वप्रथम मैं परम पूज्य गुरु महाराज के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। उसके उपरांत आप सभी वैष्णव भक्तों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और आपसे कृपा की याचना करता हूँ कि गुरु महाराज का परम स्नेह है कि इस पामर को भी वो ये सौभाग्य देते हैं जिससे कि आप सब भक्तों का और अधिक संग मिल सके। मैं इसको वैसे ही देखता हूँ जैसे कि एक वीक स्टूडेंट होता है क्लास में, तो टीचर कई बार उसको प्रोत्साहित करने के लिए खड़ा कर करके पूछते रहते हैं कि अब तुम इसका आंसर बताओ, तुम इसका आंसर बताओ। दिस इज हाउ गुरु महाराज इज इंस्पायरिंग मी ऑल्सो। और निश्चित रूप से इससे मुझे बहुत अधिक लाभ हो रहा है। आप सभी वैष्णव के संग में कुछ कहने का, कुछ समझने का और अधिक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू गुरु महाराज एंड पद्माली प्रभु इन पर्टिकुलर। तो हमने पूर्व के एक सेशन में आपके साथ में डिस्कस किया था अनुगत्य के विषय में, वैष्णव संघ के विषय में, वैष्णव सेवा के विषय में। जस्ट अ स्मॉल रिकैप, उसमें हमने महाप्रभु का वो कथन सुना था जिसमें वो कुलीन ग्रामी जो भक्त थे उनको हर साल वो उपदेश दिया करते थे। और इस साल उन्होंने तीसरे वर्ष उनके एक प्रश्न के उत्तर में उन्हें ये कहा था कि उनको सबसे प्रिय क्या वस्तुएं हैं, क्या दो तत्व उनको सबसे प्रिय हैं, दो बातें। तो उन्होंने कहा था कि प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। तो वैष्णव सेवा, तो वैष्णव सेवा हमने उसके विषय में सुना था कि वैष्णव सेवा और हरि नाम ये दोनों ही अहेतु की अप्रतिहता होने चाहिए। इसमें किसी प्रकार का हेतु नहीं होना चाहिए। ये कहना सरल है, हेतु नहीं होना चाहिए, परंतु इसके लिए हम सबको अथक प्रयास करना होगा। कल हमारे सच्चिदानंद प्रभु जी बता रहे थे कि हाँ, हमारी सारी चेष्टाएं, हमारे सारे प्रयास निस्वार्थ होने चाहिए। निस्वार्थ मतलब बिना किसी हेतु के, अपना कोई पर्सनल गेन देखे बिना, वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए। ये वैष्णव हैं, ये चैतन्य महाप्रभु को बहुत, यदि मैं इनकी सेवा करूंगा तो निश्चित रूप से महाप्रभु प्रसन्न होंगे और मुझे और अधिक वैष्णवों का संग भेजेंगे। तो हमने अनुगत्य में समझा था कि किसी वरिष्ठ वैष्णव भक्त का यदि हम संग स्वीकार करते हैं, उनको अपना हृदय खोल करके उनसे गाइडेंस लेते हैं, तो फिर दैट मीन्स हम अलाउ करते हैं, हम इस बात को अलाउ करते हैं कि जो उनका मूड है वो हमारे निकृष्ट तमोगुणी रजोगुणी स्वभाव को, देयर मूड ओवरराइड्स आवर कंडीशन्ड मूड। एंड हमने ये भी देखा था कि यदि हम अनुगत्य स्वीकार करते हैं किसी मध्यम अधिकारी भक्त का, किसी भक्त का जो कि वास्तव में शुद्ध भक्ति के लिए ललायित है, हमने भी डिस्कस किया था कि शुद्ध भक्ति इस कलयुग में बहुत मुश्किल है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं
परंतु यदि कोई भक्त स्ट्रगल कर रहा है, बहुत अथक प्रयास कर रहा है, तो उसको भी शुद्ध भक्त समझा जाना चाहिए। तो हम ऐसे शुद्ध भक्त का जब संग करते हैं और उनसे अपना हृदय दुह्यम आख्याति प्रचिति करते हैं, तो फिर हमको समुचित ऐसे सॉल्यूशंस मिलते हैं जिसके द्वारा न केवल हम अपने आध्यात्मिक जीवन अपितु अपने भौतिक जीवन, अपने भावनात्मक इमोशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, मटेरियल लाइफ, सबके हम समुचित जो है उत्तर हमको मिलते हैं, सॉल्यूशंस मिलते हैं। अन्यथा क्या होगा कि हम लोग स्वयं विम्सिकली कार्य करते रहेंगे। इस साल मुनाफा ज्यादा हो गया तो एक गाड़ी और खरीद ली, अगले साल मुनाफा कम हो गया या नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेशन में चले गए। मतलब अपनी लाइफ को अपनी तरीके से हाँक रहे हैं। मनोरथेन आसति धावतो बहि, कहाँ से आएंगे, कहाँ से सोल्यूशन हमको मिलेगा, कहाँ से हम सही मार्ग पर चल पाएंगे यदि हम उन्नत वैष्णवों का संग नहीं करेंगे और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुपालन नहीं करेंगे। तो पिछले सत्र में हम लोगों ने यही डिस्कस किया था और कई उदाहरणों से हमने समझा था किस प्रकार से रूप गोस्वामी, प्रभुपाद, सारे आचार्य जो है अनुगत्य में रहे, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो ये अनुगत्य हमको प्राप्त होता है जब हम वैष्णवों की सेवा करते हैं। हमने ये भी सुना था कि कैसे राजा कुलशेखर भगवान से प्रार्थना करते हैं, यदि आप मेरा स्मरण करना चाहते हो, मद जन्मना फलमिदं मधुकैटभारे, मद प्रार्थनीय मद अनुग्रह एषैव त्वद् भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य। हमने उसमें देखा था हर श्रेणी के वैष्णवों के प्रति हमारा यदि एक समान भाव है, हम किसी में ये नहीं देखते ये ऊंचा ये नीचा, तो जब ये भाव भगवान हमारा देखते, देखिए कृष्ण भावनामृत एक बहुत ही अद्भुत साइंस है और इस अद्भुत साइंस में हमारा और भगवान के बीच का डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश हो रहा है। तो हम कोई भी सेवा करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं भक्ति पूर्ण, तो उसमें हमें समझना चाहिए कृष्णा इज डायरेक्टली वॉचिंग अस, ही इज इन आवर हार्ट्स, भगवान हमारे हृदय में, भगवान देख रहे हैं। तो जब हम वैष्णवों का सम्मान करते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं, उसका फल क्या होता है? और अधिक वैष्णवों का संग प्राप्त होता है, उन्नत वैष्णवों का संग प्राप्त होता है। उन्नत वैष्णवों के संग में क्या होता है? उनके द्वारा हमें भजन क्रिया प्राप्त होती है। भजन क्रिया के द्वारा क्या होता है? हम लोग शनै शनै अनर्थ निवृत्ति की ओर बढ़ते हैं और इन वैष्णवों के संग में हमको नाम के प्रति विशेष हमको प्रेरणा प्राप्त होती है, क्योंकि ये जो उन्नत वैष्णव होते हैं इनका नाम से बहुत आसक्ति होती है। तो हमने देखा कि इस्कॉन में जो बहुत ही स्पिरिचुअली डेवलप्ड डिवोटीज हैं, बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं, उनका ये जो दूसरा कार्य महाप्रभु बता रहे हैं, नाम संकीर्तन, इस पे उनकी विशेष रुचि होती है। और ये मैं अपने अनुभव से 30-32 साल के अनुभव से आप सबको बताना चाहता हूं कि जिन वैष्णव भक्तों का नाम प्रभु से अगाध प्रेम और आसक्ति हो गई, वो सालों साल बिना किसी कमी के और सारे उफान और तूफानों को सहन करते हुए और सुंदर हीरे की तरह निखर करके आज भी आंदोलन का शोभा बढ़ा रहे हैं, इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज, परम पूज्य भूरिजन प्रभु, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, शिवराम स्वामी महाराज, हमारे मेरे शिक्षा गुरु इस ग्रेस सच्चिदानंद, इन लोगों का विशेष नाम के प्रति लगाव है। तो महाप्रभु क्या करें? प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन। तो वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन ये दोनों जो है दे आर लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। व्हेन वी डू चैंट नाइसली, जब हम नाम जब बहुत सुंदर तरह से करते हैं, नाम प्रभु कृपा करके हमको और उन्नत वैष्णवों का संग देते हैं। उन उन्नत वैष्णवों का संग प्राप्त करके हमको फिर नाम के प्रति और आसक्ति डेवलप होती है और इस तरह से हम धीरे धीरे करके जो है जो नाम, शुद्ध नाम की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं। और ये हम सबके जीवन का प्रयोजन है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक एक भक्त के जीवन का ये प्रयोजन है कि वो शुद्ध नाम तक पहुंचे। तो नाम संकीर्तन के विषय में आज हम बोलेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड होली नेम वीक आ रहा है, तो आई थॉट दिस इज द बेस्ट टाइम एंड मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक to discuss on this, तो नाम संकीर्तन दो प्रकार का होता है।
हाँ, जैसे षड गोस्वामी वृंद के विषय में हम लोग सुनते हैं, कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांबो निधि। कृष्ण के नामों का उत्कीर्तन, उन्नत स्वर में जोर जोर से कीर्तन करना और नाचना उसके ऊपर, प्रेम अमृतांबो निधि, और प्रेम अमृत की अंबुधि में गोते लगाना, ये पहला नाम संकीर्तन का प्रकार है, जिसमें कि जो भक्त है वो उत्कंठ होकर के प्रेम पूर्वक हरि नाम का उच्च ध्वनि से वाद्य यंत्रों के साथ उन्नत कीर्तन करता है। और दूसरा षड गोस्वामी वृंद के विषय में बताया, संख्या पूर्वक नाम गान नत भी कालावसानी कृतो निद्राहार विहार कादि विजितौ च अत्यंत दीनौ चयो। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी हमेशा प्रणिपात होते हुए, हमेशा प्रणाम करते हुए, नति भी के गुरु महाराज कुछ दिन पहले बता रहे, नतमस्तक होकर भूमि पर बार बार गिरकर, और संख्या पूर्वक नाम, कालावसानी कृत, निद्रा आहार विहार कादि विजितौ च अत्यंत दीनौ चयो। दिस इज द मूड इन विच द होली नेम इज टू बी चैंटेड। निद्रा आहार विहार आदि विजितौ, इन सबको जीत कर, इन सबको धत बता के, नॉनसेंस, निद्रा आहार, इसमें से समय निकालते थे, थोड़ा सा एक दोना छाछ पी लिया, और दिन रात राधा कुंड के तट पर बैठ करके हरि नाम का आश्रय लेके जप कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। राधा रानी आकर के उनका रक्षण कर रही, भगवान आके रक्षण कर रहे हैं। निद्रा आहार विहार कादि विजितौ च अत्यंत दीनौ चयो, दे ऑल वर एम्बॉडीमेंट ऑफ तृणादपि सुनीचेन। तृणादपि सुनीचेन, महाप्रभु से कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा कीर्तन करना है हमको। तो ये दूसरा प्रकार है नाम जप का। तो इन दोनों को ही करने का महत्व है, उत्कीर्तन, कृष्णोत्कीर्तन, नाम गान नति भी, नाम गान करना, और दूसरा संख्या पूर्वक नाम गान। परंतु इन दोनों में यदि हम समझना चाहेंगे तो इन दोनों में श्रेष्ठ है संख्या पूर्वक नाम गान। क्यों? जबकि उत्कीर्तन करने से तो स्वयं के साथ अन्य जीवात्माओं का भी कल्याण होता है, परंतु संख्या पूर्वक नाम गान करने से क्या होता है कि अगर हम इसको बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ होकर, बहुत ही गंभीरता पूर्वक, ध्यान से, प्रेम पूर्वक यदि नाम जप करते हैं, तब हमको कृष्णोत्कीर्तन गान करने की प्रेरणा प्राप्त होती है, मूड प्राप्त होता है। अन्यथा हम केवल अपने गाने की कला का, अपने वाद्य यंत्र बजाने की कला का केवल प्रदर्शन करके आ जाते हैं। नाम प्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं ये ट्यून गाऊंगा, अब मैं ये ट्यून गाऊंगा, मैं बहुत सुंदर गाता हूं, मेरे गाने पे सब नाचते हैं, ये भाव नहीं है। तो ये भाव कृष्णोत्कीर्तन करने का कहां से प्राप्त होगा? संख्या पूर्वक नाम गान करने से। यदि हम संख्या पूर्वक, ये सर्वोत्कृष्ट और सबसे प्रमुख कार्य है संख्या पूर्वक नाम गान। इसके विषय में आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कृष्णोत्कीर्तन के विषय में सुनते हैं महाप्रभु क्या कह रहे हैं। महाप्रभु ने नामाचार्य हरिदास ठाकुर से अंत्य लीला के 3 अध्याय में पूछा है, पृथ्वी ते बहुत जीव स्थावर जंगम, यह सवार की प्रकार होय विमोचन। हे नामाचार्य, पृथ्वी में इतने इतने स्थावर और जंगम जीव भरे पड़े हैं, इन सबका किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त होगी? कैसे सबको उच्च मोचन, इनका कैसे भवसागर से मोचन होगा? कैसे निकलेंगे यहाँ से? महाप्रभु ये बड़े क्रंदन भाव से, बड़ी गंभीरता से इस बात को पूछ रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु इस महावदान्य अवतार, वो आए हैं हम स्थावर जंगम सबको मुक्त करने के लिए, सबको कृष्ण प्रेम देने के लिए। तो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं, हरिदास कहे प्रभु, प्रभु से कृपा तोमार, स्थावर जंगम आगे करी आच निस्तार। हे प्रभु, आपकी कृपा से स्थावर और जंगम दोनों का ही निश्चित रूप से निस्तार होगा। अब कैसे होगा?
ये बता रहे हैं। तुम्ही छे करियाचे এই उच्च संकीर्तन, तुम्ही ये करियाचे এই उच्च संकीर्तन स्थावर जंगमेर से हयत श्रवण। आप जब उच्च कीर्तन करते हो, जब उन्नत भाव से जब आप कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए जब निकलते हो, तो स्थावर, स्थावर मतलब वृक्ष, जंगम, जीव जंतु, पशु पक्षी कीट इत्यादि, ये सब उसका श्रवण करते हैं। और उस श्रवण को होने करने से क्या होता है? शुनिया जंगमेर होय संसार छाये। और जो जंगम जब उस हरि नाम को सुनते हैं, उनका संसार तत्काल क्षय हो जाता है, भव रोग क्षय हो जाता है। स्थावर से शब्द लागे प्रतिध्वनि होय, शुनिया जंगमेर होय संसार क्षय, स्थावर से शब्द लागे प्रतिध्वनि होय। और स्थावर जो होते हैं, जो वृक्ष हैं, जब वो आपकी ध्वनि को सुनते हैं तो उनकी प्रतिध्वनि होने लग जाती है, इको होने लग जाता है। जैसे महाप्रभु जब झारखंड के फॉरेस्ट में जा रहे हैं, तो उस समय महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे हैं तो चारों तरफ से इको होकर आवाज आ रही है, पहाड़ों से टकराकर, वृक्षों से टकराकर। जैसे व्यासदेव जब सुखदेव गोस्वामी के पीछे दौड़ रहे हैं, हा पुत्र करते हुए, उस समय भी पेड़ों की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। वो कह रहे हा पुत्र, उधर से भी आवाज आ रही। तो वृक्ष इको, वृक्ष जो है इको करते हैं। प्रतिध्वनि नहीं से करय कीर्तन, वो प्रतिध्वनि नहीं है। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं महाप्रभु से, वो प्रतिध्वनि नहीं उन वृक्षों की, वो वृक्ष वास्तव में कीर्तन कर रहे हैं। तोमार कृपार ए आवश्यक अकथ्य कथन, कह रहे प्रतिध्वनि नहीं, ये प्रतिध्वनि नहीं होती है जो इको सुनाई पड़ रहा है। ए से ही करय कीर्तन, वो सब कीर्तन कर रहे महाप्रभु। तोमार कृपार ए अकथ्य कथन, और आपकी कृपा से ये अकथ्य कथन सिद्ध हो जाता है। अकथ्य मतलब जो नहीं हो सकता है, which cannot happen, that also happens। जो स्थावर है वो कीर्तन करने लगते हैं। जब महाप्रभु कीर्तन करते थे तो स्थावर जंगम सब कीर्तन करते थे। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी इस प्यार के परपट में लिखते हैं, when loud chanting of the Hare Krishna mantra is performed all over the world by those who follow in your footsteps, my dear Lord, all living entities, moving and non-moving, dance in ecstasy and in devotional love। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, और आज हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। गौरांग प्रभु बता रहे थे, जब महाराज का 70वां व्यास पूजा का हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, कि अमेरिका के मंदिरों में इतना युवा वर्ग कभी एकत्रित नहीं होता है जितना जब परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज वहां जाते हैं और जब कीर्तन करते हैं, तो जैसे कि सब के सब दौड़े चले आते हैं। और जब महाराज सी बीच के ऊपर कीर्तन करने जाते हैं, नगर कीर्तन करने जाते हैं, तो वृक्षों से भी, तो इन सब का जो निस्तारण है वो भक्तों के द्वारा उन्नत कीर्तन करने से होगा। तो हम भी जब सड़क पे जाते हैं हरिनाम कीर्तन करने के लिए, our mood should also be like this. Let this tree here, let these birds here, let this dog here, जो कुत्ता देख के भौंकने लगता है, आप थोड़ी देर उसके सामने प्रेम से हरे कृष्णा ऐसा बोलेंगे तो वो कुत्ता भी पूंछ हिलाने लग जाता है। और यही भक्तों का लक्षण होता है। स्थावर जंगम देखी न देखी तार मूर्ति, सर्वेर देखी इष्ट देवेर स्फूर्ति। अपने इष्ट देव की स्फूर्ति देखता है भक्त, हर प्राणी में, हर जीव के अंदर अपने भगवान का दर्शन करता है और उनसे हरिनाम कराने की। मुझे याद है एक बार 1991 की बात है, हम लोग ऊटी में थे, परम पूज्य भक्ति राघव स्वामी महाराज के साथ यूथ कैंप के लिए गए थे। 91 की बात है ये। और एक हम लोग सुबह मंगला आरती में जा रहे थे, तो एक कुत्ता बड़ी जोर जोर से भौंक रहा था, और परम पूज्य भक्ति राघव स्वामी महाराज ने कहा हरे कृष्णा, और वो 2 बार के हरे कृष्णा कहने में एकदम शांत हो गया। This is the effect of Harinam. This is the effect of Harinam. तो ये है उत्कीर्तन करने का मूड और उत्कीर्तन करने का
प्रभाव। अब हम संख्या पूर्वक नाम जप के विषय में समझते हैं। जैसा मैंने बताया कि दोनों विधियों में ये ज्यादा श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस विधि के द्वारा हम नाम प्रभु को अपने जिह्वा से उच्चारण करके कर्णों के माध्यम से हृदय में उतरने का और चांस देते हैं, और उस हृदय में उतरने के बाद ये नाम प्रभु ये साक्षात भगवान है। आज मैं अभी देख रहा था, हमारे अभय गौरांग प्रभु दोनों हाथ उठा करके जप कर रहे थे, और एक माता जी है कुलदीप समीक्षा गुना से, एमपी से, शी वाज चैंटिंग लाइक दिस, यू नो, शी वाज सो मच एंजॉयिंग रिलिशिंग चैंटिंग। तो मुझे ऐसा स्मरण हुआ जैसे कि हम लोग बचपन में पोएम करते थे, रिंगा रिंगा रोजेस पॉकेट फुल ऑफ पोजेस, जैसे ऐसी वो भी नाच रही है जैसे हरिनाम प्रभु का हाथ पकड़ के। यस, हरिनाम प्रभु इज लाइक आवर मदर, लाइक आवर फादर, लाइक आवर फ्रेंड। उनका हाथ पकड़ के नाचे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। This is how we have to dance with the holy name. जैसे कि भगवान ने जब गिरिराज की जो प्रार्थना बोली ब्रजवासियों के समक्ष, नमो वृंदावन अंकाय तुभ्यम गोलोक मोलने पूर्ण ब्रह्मात पत्राय गिरि गोवर्धन नमो नमः। नमो वृंदावन अंकाय, जैसे कि वृंदावन को अपने अंक में धारण, जैसे माँ को आपने देखा होगा गांव में बच्चे को अपने हिप के ऊपर रख लेती है ऐसे करके, अंक के ऊपर स्थापित कर देती है। इस प्रकार से गिरिराज ने वृंदावन धाम को अपने अंक में धारण किया हुआ, इसलिए वो बाबा कहलाते। और क्या करते हैं? सारे ब्रजवासियों का, सारे पशुओं का, पक्षियों का, सबका पालन करते हैं। तो माँ जो अपने अंक पे बच्चे को धारण करती है, बीच बीच में उसको दूध भी पिलाती रहती है, कुछ खिलाती भी रहती है, बीच बीच में उसको पुचकारती रहती है, प्यार करती रहती है। सिमिलरली हम सबको भी नाम प्रभु के अंक में स्थापित होना है। दिस इज माई मदर, दिस इज माई फादर, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है ना। तुहु सर्वमय, गुरु पति दैत तनय तुहु सर्वमय, आप सब कुछ मेरे हो। नाम प्रभु से हम ऐसा कहें, नाम प्रभु से हमारा इतना अगाध प्रेम और लगाव होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द फॉर्म ऑफ कृष्णा विच इज विद यू 24 आवर्स। दिस इज द फॉर्म ऑफ कृष्णा जो हमारे साथ 24 घंटे रहती। तो ये जो सुबह का समय है जिसमें हम सब जप करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है, मेंट फॉर यू एंड द होली नेम, अस, हमारे और हमारे प्रभु भगवान हरि नाम प्रभु के बीच के एक बहुत इंपॉर्टेंट समय है। तो इस समय में यदि हम सब दृढ़ता पूर्वक, ध्यान पूर्वक 16 माला का एक स्थान पर बैठकर जप करते हैं और इस जप को निरंतर बढ़ाते जाते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे what Prabhupada has said, what Prabhupada has said, कितना हमको जप करना है, how much time we have to spend in chanting. तो अब हम भगवत गीता के थोड़ा चलेंगे और भगवत गीता से समझेंगे कि what is Prabhupada saying in one of the purports. बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक प्रभुपाद जी वहां परपट में देखिए क्या लिखते हैं। ये श्लोक जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता के 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं अर्जुन से, तुम मेरे भाव को कैसे प्राप्त करोगे? तुम मेरा जप, नाम जप करते हो, मेरे विग्रहों की सेवा करते हो, लेकिन ये सब करने के उपरांत भी तुम मेरे भाव को कैसे प्राप्त करोगे? हाउ यू विल अटेन माई नेचर, हाउ यू विल अटेन माई नेचर? कृष्णा इज रेडी टू गिव हिज नेचर। और कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर यह प्रयाति स मद भावम याति नास्ति अत्र संशय। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। तो देखिए हम लोगों का जो मुख्य लक्ष्य है इस जीवन का ना, हम सबके जीवन का लक्ष्य ये है, हम स्वयं से ये नहीं कह सकते द गोल ऑफ माई लाइफ इज टू गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड। वी मे प्रिपेयर आवरसेल्व्स, हम अपनी तैयारी कर सकते हैं पूरी, लेकिन भगवत धाम ले जाना या ना ले जाना ये भगवान का प्रेरोगेटिव है, ये हमारा नहीं है। हमें क्या करना है? और एक्चुअल में अगर आप देखिए, एक क्लास में मैं था, किसी भक्त ने पूछा था सबसे कि आप में से कितने लोग भगवत धाम जाना चाहते हो? सबने हाथ उठा दिया।
और उस भक्त ने कहा आप में से कोई गौड़ीय वैष्णव नहीं है। एंड दिस वाज लाइक अ शॉक। उसने कहा क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा माम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहितु की तो मेरे को बार बार जन्म लेना पड़े। तो व्हाट डज महाप्रभु वांट्स अस? हमें क्या करना है? हमको सतत स्मरण करते हुए कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, या कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है जिससे कि हम सतत स्मरण कर सकें। हम किसका स्मरण 24 घंटे कर सकते हैं? एक लड़की अपने लवर का कैसे स्मरण कर पाती? क्योंकि वो उससे प्रेम करती है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, निरंतर स्मरण करना भगवान का, निरंतर स्मरण करना। और राजा कुलशेखर एक बहुत सुंदर श्लोक में भगवान से प्रार्थना किए हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना किए हैं, और वो कहे हैं मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवंतम एकांतम इयंतम अर्थम। एकमात्र अर्थ ये मेरा, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। मुकुंद मूर्धना, मैं अपने सर को प्रणिपत्य याचे, मैं आपके चरणों में गिरा के आपसे याचना कर रहा हूं। भवंतम एकांतम इयंतम अर्थम, ये जो अर्थ है इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। क्या अविस्मरत चरणारविंदे, मैं कभी भी आपके चरण कमलों का अविस्मरण ना हो मुझे। दिस इज व्हाट आई एम प्रेइंग टू यू माय डियर लॉर्ड। भवे भवे मेस्तु भवत प्रसादा, मुझे बार बार जन्म लेना पड़े, मुझे बार बार जन्म लेना पड़े, बस मुझे आप ये देना कि अविस्मरत चरणारविंद, मैं आपके चरणों का कभी मुझे विस्मृति ना हो। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के परपट में ये लिख रहे हैं कि इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है, मद भाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धादि शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्धाति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया हो। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। तो हम सबको ये सोचना होगा कि हम क्यों नहीं स्मरण कर पा रहे हैं, वेयर आर वी फेलिंग, और इसी को मनन कहते हैं। हमारे शिक्षा गुरु का इस पे बहुत अधिक जोर रहता है कि मनन करना, मनन इज कॉन्टेम्पलेटिव स्टडी अबाउट वन ओन सेल्फ। मेरा स्मरण क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे भगवान का सतत स्मरण कर सकता हूं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। प्रभुपाद कहते हैं अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहनशील होकर तरोरपि सहिष्णुना हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तो अब हम लोग सोचेंगे कि ये दो नवधा भक्ति की अलग अलग प्रक्रियाओं में क्या संबंध है। एक है कीर्तन और एक है स्मरण। कीर्तन के आचार्य शुकदेव गोस्वामी, स्मरण के आचार्य प्रहलाद महाराज, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करके कैसे सतत स्मरण प्राप्त कर सकता हूं? तो इसका जवाब भी हमको चैतन्य चरितामृत में मिलता है। जिस समय हीराबाई नाम की वैश्या नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का पतन कराने के लिए आई, और नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ने कितना उक्तिपूर्वक, कितना युक्तिपूर्वक उसका शोधन किया। उन्होंने बाद में उससे कहा, हीराबाई मुझे पता चल गया था कि ये रामचंद्र खान मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, और मैं चाहता तो 3 दिन पहले चला जा सकता था यहाँ छोड़कर, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपको मैं ये कुटिया स्थापित करके आपको एक शुद्ध भक्त बना करके यहां से जाऊंगा। और फिर महाप्रभु नामाचार्य ने क्या किया? तो
नामाचार्य हरिदास ठाकुर बोले, सेई दिन या जाई ताम ए स्थान छाड़िया, 3 दिन रहिलान तोमार निस्तार लागिया। तुम्हारा कल्याण करने के लिए मैं यहाँ 3 दिन तक रहा। वरना कोई शुद्ध भक्त होगा, आज हम लोग कोई ऐसे स्थान पे चले जाएं, कोई ऐसी सुंदर स्त्री सामने आ जाए, बड़े से बड़े विचलित हो जाएंगे। लेकिन नामाचार्य श्रीदास, दिस इज द पावर ऑफ प्योर चैंटिंग ऑफ द होली नेम। से दिन जाई ताम ए स्थान छाड़िया, 3 दिन रहिलान तोमार निस्तार लग गया। उसी दिन जिस दिन रामचंद्र खान ने मेरे अगेंस्ट ये प्लॉटिंग किया था, मैं इस स्थान को छोड़ के जा सकता था, परंतु मैं तुम्हारे कारण तुम्हें निस्तार करने के लिए, तुम्हें भक्ति देने के लिए यहाँ पर रुका हूं। उसके बाद बोले, वैश्या कहे कृपा करी करह उपदेश, की मोर कर्तव्य जाते जाए भव क्लेश। वैश्या ने कहा, मुझ पर कृपा करके मेरे को उपदेश कीजिए कि मेरा क्या कर्तव्य है, जिससे कि मैं क्या करूं जिससे ये भव के क्लेश मेरे खत्म हो जाए। ये 3 दिन की संग का प्रभाव दिख रहा है। ठाकुर कहे, घरेर द्रव्य ब्राह्मण कर दान, यही घर आसी तुम्ही करह विश्राम। ठाकुर ने कहा, तुम अपने घर का द्रव्य ब्राह्मणों को सबको दान करके पहले आ जाओ, और ये मैंने तुम्हारे लिए घर बनाया है, इस घर में तुम आकर के वास करो। और फिर क्या बोले, निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन, अचिरात पावे तब कृष्णेर चरण। तो ये महाप्रभु, ये नामाचार्य ने कहा, दिस इज द रिप्लाई, दिस इज वेयर वी फाइंड, प्रभुपाद जो कह रहे हैं, निरंतर हरे कृष्ण मंत्र जप करके कोई जो है वो भगवान का सतत स्मरण कर सकता है। और यही बात नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ने इस वैश्य से कहा कि चैंट द हरे कृष्ण मंत्र कंटिन्यूअसली, निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन, अचिरात पावे तब कृष्णेर चरण। तो इसके पर्पट में प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, इन आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट we are teaching our followers to chant Hare Krishna mantra continuously on beats, not just 16 rounds. He is saying कि खाली 16 माला जप करके माला को ऐसे बांध के रखा कि अगले दिन तक इसका मुंह भी नहीं देखेंगे। No. In our Krishna consciousness movement, we are teaching our followers to chant the Hare Krishna mantra. निरंतर नाम लेने की हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भक्तों का प्रशिक्षण कर रहे हैं। Even those who are not accustomed to this practice are advised to chant at least 16 rounds. तो ये जो 16 rounds हैं, ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो लोग accustomed नहीं है इस सतत हरि नाम करने के लिए, उनके लिए 16 माला का जप है, so that they may be trained, so that they may be trained. तो 16 माला जो, it's like a trailer, it's like a sample. It's not all in all. कीर्तनीय सदा हरि महाप्रभु is recommending. तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। तो ये जो नामाचार्य ने कहा कि निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन, अचिरात पावे तब कृष्णेर चरण। तो निरंतर नाम लेने से एतबली तार नामे उपदेश कोरी, उठिया चलीला ठाकुर बोली हरि हरि। और इस प्रकार से नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर वहां से चले गए, और उस समय से जो वैश्या थे, तबे से ही वैश्या गुरुर आज्ञाए लोइला, ग्रह वित्त जेवा छिला ब्राह्मणेर दिला। सब कुछ त्याग कर, भूख प्यास को शांत करके, जो मिलता था वो पाकर, सर को मुड़वा के उस वैश्या ने 3 लाख नाम जप करना शुरू किया। दिस इज निरंतर नाम लॉय कर तुलसी सेवा। तो हम सबको सोचना है कि हमारा नाम जप किस प्रकार से बढ़े, और इसको बढ़ाने के लिए कुछ भी करना पड़े। 16 rounds we should chant in one go, and then throughout the day we should look for an opportunity, कब मुझे मौका मिले और मैं 4 माला और खींच दूं, 12 माला और कर दूं। तो अभी मैं वृंदावन धाम में था, और नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का तिरोभाव था,
और मुझे सौभाग्यवश तमाल गोविंद प्रभु की कृपा से मुझे एक वैष्णवों का संग मिला, जो वैष्णव 3 लाख नाम जप उस दिन कर रहे थे। और एक हमारे भक्त हैं वृंदावन धाम के गुणाकेश प्रभु, जिनका आपने सबने सुना होगा नाम। वो गुणाकेश प्रभु जो थे, उनसे उनका बीच में आनंद वृंदावन प्रभु वो ले रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे। तो गुणाकेश प्रभु वृंदावन धाम में डेली 2 लाख नाम जप करते हैं, डेली। और उस दिन के लिए विशेष करके वो बॉम्बे जाते हैं, मुंबई जाते हैं आनंद वृंदावन प्रभु को संग देने के लिए, जिस दिन वो सब करीब 200-250 भक्त इकट्ठे 3 लाख नाम जप करते हैं। तो गुणाकेश प्रभु ने एक बड़ी सुंदर बात बताई, वहां पे मैं आपके सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, मैं केवल हरिनाम प्रभु को जानता हूँ। इट वॉज सो टचिंग। मैं केवल हरिनाम प्रभु को जानता हूँ, मुझे नहीं पता मेरा घर बार कैसे चल रहा है, मुझे नहीं पता। मेरा लड़का बीकॉम फेल था, मुझे पता नहीं वो कैसे कंपनी का सीईओ बन गया, और एक दिन 1 करोड़ रुपए का उसको ई सॉफ्ट वगैरह से फायदा हुआ, मेरे सामने लाके रख दिया, बोला पिताजी इतना मुनाफा हुआ। मैंने कहा ये तो सब हरिनाम प्रभु की कृपा है, इसको उनकी सेवा में लगा। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद कहते कि 14 भुवन माझे और कुछ नहीं है, नामे बिना कछु नाही को आर 14 भुवन माझे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस बात का हम सबको दृढ़ विश्वास करना होगा। नाम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है पूरे 14 भुवन। ए माना दुर्लभ मानव देह पाइया की करे भावना से, ए बिना भजले यशोदा सुत चरम परी बेलाजे। नाम सुधारस कोरी अपान जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण, नाम बिना कछु नाही को आर 14 भुवन माझे। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे साथ कुछ इस्कॉन में ऐसा हुआ था, मैं उन भक्तों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन भक्तों के कारण मुझे सेवा से बाहर कर दिया गया, और तब से मैं 2 लाख नाम का जप शुरू कर दिया। तो उन्होंने सबसे पहले उन भक्तों का बड़ा आदर पूर्वक, सत्कार पूर्वक उनका धन्यवाद किया। हम सबके भी जीवन में कुछ ना कुछ घटित होता रहता है, तो इस सब में हमको शरण अगर लेनी है, शेल्टर लेनी है, ओनली होली नेम, हरे नाम एव केवलम। इस हरिनाम के विषय में कितनी कितनी व्याख्या, कितनी कितनी इसकी स्तुति हमारे आचार्यों ने की है। तो कितना बड़ा साधन होगा, कितना मतलब सुंदर साधन होगा। प्रभुपाद जी कह रहे हमें आवश्यकता नहीं थी ब्रजवासियों की इस कृष्ण बलराम मंदिर को स्थापना करने की, हम तो केवल हरिनाम को करके इस कृष्ण बलराम की स्थापना कर सकते थे। ये साधनों की मुकुटमणि है हरिनाम के। निखिल श्रुति मौली रत्न माला द्युति निराजित पाद पद्म जानता, आई मुक्त कुलैरूपास्य मानव परितस्तुम हरिनाम संश्रया। मुक्त कुलों के द्वारा उपास्य मान जो है, नारद, शुक, सनत कुमार आदियों के द्वारा जो उपास्य मानव है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इतनी इतनी तो हमारा क्यों नहीं अनुराग उत्पन्न हो रहा है? वेयर आर वी फेलिंग? व्हाई? नाम में महाप्रभु चीख चीख के कह रहे हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, निज सर्वशक्ति। सारी शक्तियां भगवान की कृपा शक्ति, संधिनी शक्ति, संवित शक्ति, अलादिनी शक्ति, भगवान की संकल्प शक्ति, सारी शक्ति भगवान की इस नाम में है। दुर्दैव में दशमी आजनी नाम, मेरा हाय कैसा दुर्दैव है, कैसा दुर्भाग्य है। तो इसीलिए हमारे आचार्य हमको बोल रहे, बार बार बोल रहे हैं कि रति उत्पन्न करो नाम प्रभु के प्रति। रति उत्पन्न करो, कैसे होगी रति उत्पन्न नाम प्रभु के प्रति? तो कहते हैं कि दंभम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वाम अतितराम। दंभ को छोड़ दो, कुरु रतिम अपूर्वाम अतितराम, ऐसी पहले किसी से रति थी नहीं, अनप्रेसिडेंटेड एक्सेसिव रति। लेकिन ये होगी कैसे? दंभम हित्वा, सदा दंभम हित्वा। इट्स नॉट द इवेंट, दंभ हित्वा इज नॉट एन इवेंट, इट्स अ प्रोसेस। ये हमको सामने लिखा हर समय दिखना चाहिए, सदा दंभम हित्वा। दंभ क्या है? दंभ है हम उस डेजिग्नेशन में व्यवहार करते हैं जो कि मटेरियल डेजिग्नेशन होती है, और हम अपनी वास्तविक पहचान में कोई व्यवहार नहीं करते, तो ये दंभ है। जो हम हैं
वो वैसा अब व्यवहार नहीं, जो हम नहीं है हमारा वैसा व्यवहार है। और हमेशा ये दिखाने का प्रयास करना, मैं कैसे श्रेष्ठ हूँ, मैं कैसे सुंदर कीर्तन करता हूँ, मैं कैसे सुंदर लेक्चर देता हूँ, मैंने कितनी भगवत गीता बांटी, मैंने कितना। दिस इज ऑल मटीरियल डेजिग्नेशन, दिस आर ऑल मटीरियल डेजिग्नेशन। मैं एक अच्छा इंजीनियर हूं इसलिए मैं ये मंदिर का निर्माण कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। इस तरीके की सोच रखना। वी हैव टू गिव अप ऑल मटीरियल डेजिग्नेशंस। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभुपाद बताते हैं कि आई स्वांतर भ्रातश चटुभिर अभियाचे धृतपथ। हे मेरे भैया मन, हे मेरे स्वांतर, अंतर में रहने वाले भाई मन, मैं आपकी चटुभिर अभियाचे धृतपथ, मैं आपके चरणों को पकड़ के ये प्रार्थना कर रहा हूं। सदा दंभम हित्वा कुरुरतिम अपूर्वाम अतितर, इन सब से अतितराम अपूर्वम रति उत्पन्न करो। अतितराम मतलब अति, अतितर, अतितराम, सुपरलेटिव डिग्री। ऐसा एक्सेसिव अटैचमेंट कभी किसी से ना हुआ। हे मेरे भैया मन, मैं तुम्हारे चरण पकड़ के प्रार्थना करता हूं, सदा दंभम हित्वा, सदा दंभ को छोड़कर इनमें रति उत्पन्न करो। स्वमंत्रे श्री नामनी व्रज नव युव द्वंद्व शरणे, गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र में, श्री नाम में, हरि नाम प्रभु में, ब्रज नव युव द्वंद्व शरणे, राधा कृष्ण गंधर्विका गिरधारी जी के चरणों में, गुरु गोष्ठे गोष्ठालयेषु सुजन भूसर गणे, इनमें रति उत्पन्न करो। गुरु में, गुरु शिक्षा गुरु में, दीक्षा गुरु में, हमारा मार्ग शिक्षा का मार्ग है। शिक्षा गुरु में इतना अपूर्वम रति, अतितराम रति उत्पन्न करो। सदा दंभम हित्वा, सदा दंभ का परित्याग करके। देखा मैंने कितना सुंदर कीर्तन किया, सब नाचने लगे। अरे तूने कीर्तन नहीं किया, तुझे कीर्तन कराने की शक्ति कहां से आ रही थी? तू कहां से बोल सकता है? तू तो गूंगा है। पहले प्रार्थना करता है मुंह कम करोति वाचालम, और उसके बाद में क्रेडिट लेने के लिए खड़ा हो जाता है, मूर्ख व्यक्ति। सदा दंभम हित्वा कुरुरतिम अपूर्वाम अतितराम, गुरु गोष्ठे गोष्ठालयेषु, वृंदावन धाम में अपनी रति उत्पन्न करो। गुरु में अपनी रति उत्पन्न करो। शिक्षा गुरु में, दीक्षा गुरु में अपूर्व रति उत्पन्न करो। भूसर गणे, सात्विक ब्राह्मणों में, सुजने वैष्णवों में अपनी रति, अपूर्व रति को उत्पन्न करो। हे मेरे भैया मन, ये होगा कैसे? सदा दंभम हित्वा। हम सबको अपने लाइफ का मोटिव बनाना चाहिए, मैं सदैव दंभ का त्याग करके और अपनी अपूर्व रति उत्पन्न करूंगा हरि नाम में, गुरु महाराज में, शिक्षा गुरु में, वृंदावन धाम में, वैष्णवों में, सात्विक ब्राह्मणों में, गंधर्विका गिरधारी के चरणों। दिस इज हाउ वी विल डेवलप अटैचमेंट फॉर द होली नेम। इसलिए हम सबको ये होली नेम वीक आ रहा है, हम सबको सुबह 16 माला एक स्थान पे बैठ के, दिन में और माला करनी चाहिए। हर संडे को 32 माला कम से कम सबको सुबह बैठ के जप करना चाहिए। हर एकादशी को 64 माला जप करनी चाहिए। आवर पर्सनल प्रोग्रेस विल गिव इंस्टीट्यूशन द प्रोग्रेस, एंड पर्सनल प्रोग्रेस इज द बिगेस्ट रियलाइजेशन। टू सेव वन सेल्फ इज द बिगेस्ट रियलाइजेशन। श्री प्रभुपाद ने कहा, हम यदि अपनी साधना में इतने प्रतिज्ञ, इतने दृढ़ हो जाएंगे, हमें बहुत सारे तूफान आएंगे, मालूम नहीं इस्कॉन में अभी क्या क्या होगा, क्या सब चलेगा, लेकिन अगर हमारी रति, अपूर्व रति हरिनाम में हो गई, हमको कोई हिला नहीं पाएगा। आप सबने वो कथा सुनी होगी जिसमें तिनका जो था वो बड़े तूफान से हिल नहीं रहा था, वो तिनका हरिनाम प्रभु थे। कलौ दोष निधे राजन अस्ति, एक महान गुणा कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। Okay, I will stop here. Thank you all so very much. 7:30 and मैं आप सबके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आप सब वैष्णव यदि हरिनाम प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो शायद मेरी भी रति नाम प्रभु के प्रति बढ़ेगी। तो प्लीज प्रे फॉर मी। I beg at your lotus feet. Thank you very much. पद्माली प्रभु is there? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी for this wonderful talk, a session, जहाँ पर सभी भक्तों ने ये अनुभव किया होगा, ये
सहमत होंगे कि जब हम नाम साक्षात्कारी भक्तों से सब सुनते हैं तो वो बात केवल कान तक नहीं रहती, लेकिन कान से हमारे हृदय में प्रवेश करती है और हमें भी कन्विंस करती है। तो जिस कन्विक्शन के साथ प्रभु जी बोल रहे थे या बता रहे थे हमें ग्लोरीज ऑफ होली नेम फेस्टिवल कहिए या उसमें मुख्य उद्देश्य तो नाम था, और इतने जीवंत या वास्तविक उदाहरण दिए भक्तों के जो अभी इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सभी भक्तों से अनुरोध है हम एक बार इसी नाम या नाम प्रभु के द्वारा प्रभु जी का आभार व्यक्त करते एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब प्रभु जी कह रहे थे वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल में हमें करना है, तो मैं सोच रहा था कि गुरु महाराज कहते हैं, श्री प्रभुपाद ने कहा है कि हमारा इस्कॉन मूवमेंट जो है उसमें प्रत्येक दिवस एक उत्सव है। Yes. और फिर गोलोक के लिए कहा जाता है, श्री वृंदावन धाम के लिए कहा जाता है कि अ प्लेस वेयर एवरी डे इज अ फेस्टिवल। तो तब मैं बस थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर रहा था कि वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल तो हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बन सकता है कि जहां हम ये प्रैक्टिस करें, हम इसकी आदत डाल लें, और फिर पूरा जीवन हमें लगभग यही कार्य करना है कि हमारा नाम जप जो हमने वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल में ट्राई किया है, बहुत अच्छा फॉर्मूला लगा मुझे, एक एक हफ्ते में राइज करना, एक हफ्ता 16, एवरी संडे 32, 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, वो उस 2 बार अभ्यास करके 64 माला। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। मैं कह रहा था कि वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल को हमें मंच बना के पूरा जीवन ये प्रयास करना चाहिए कि हम इसी प्रकार से नाम जप करते रहे और नाम जप की शरण में रह के गुरु गौरंग की सेवा करके श्री प्रभुपाद के मिशन में हमारे इस जीवन को किसी ना किसी छोटी सेवा करके सार्थक बनाए। इस प्रयास और इस भाव से हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं और कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरिनाम जप और जपा टॉक के लिए एकत्र होंगे। कल और परसों 2 दिन गुरु महाराज जी के द्वारा विशेष जपा टॉक्स दिए जाएंगे वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल के उपलक्ष्य में, इस विश्व हरिनाम उत्सव के उपलक्ष्य में हम 2 दिन कल और परसों गुरु महाराज जी के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्रील लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Hare Hare
Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Ram 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 Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna. Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare. Hare Ram, Krishna Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Ram Hare. Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Ram Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Krishna Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Hare.
Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare 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 Hare Ram, Hare Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Saraswati Gaur Bhakt Vrinda Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Ram Hare Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, 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 Hare Krishna, Ram Hare Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Hare Ram, 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 Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Krishna Ram Hare Krishna, Ram Hare Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Ram Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Krishna, Ram Hare Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Ram Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram, Hare Krishna, 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 Krishna Hare
Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Hare 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 Krishna Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Hare 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 Krishna Ram Hare 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 Krishna Krishna Ram Hare 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 Krishna Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Hare 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 Krishna Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Hare 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 Krishna Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Ram Hare 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 Krishna Ram Hare Hare Krishna Ram Hare 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 Krishna Ram Hare Hare Krishna Ram Hare 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 Krishna Ram Hare Hare Krishna Ram Hare 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 Krishna Ram Hare 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 Krishna Ram Hare Hare Krishna Ram Hare 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 Krishna Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasdi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Ram Hare 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 Krishna Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Ram Hare 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 Krishna Ram Hare 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 Krishna Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Ram Hare 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 Krishna Ram Hare 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 Krishna Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Ram Hare 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 Krishna Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare
Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Ram Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Ram Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, 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 Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Hare Krishna, 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 Krishna Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Ram Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Ram Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare, Hare Krishna, Ram Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda,
Sri Advaita Gadadhar Sivasdi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare A humble request, dear devotees, please switch on your videos. Gurudev would really like to see you. All videos on, please. Thank you. Time for the talk also, so maybe show of hands. We could do in the beginning, maybe at the end also, but at least at the beginning. Some kind of a roll call. Beginning of the class. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'm here. Yeah, Kampa, you could. Ji Gurudev. Okay. 6 o'clock, so time for Japa talk. Standard at the beginning of the Japa talk that we raise our electronic hands as Gurudev says it, and gives us an indication of who is joining us outside of India. Up with the hands, please. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare. Wonderful. Hare Krishna, Krishna. Okay. Arjun Prabhu, Sundar Gopal Prabhu,
Tulsi Vrindavani Mataji, Suryakanta Mataji, Suryakanya Mataji, up. And new faces today. Mother Mangal. Yeah. Lavanya Rashi. Okay, your own. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Hare Krishna Baldev. Where are you? Okay. There you are here. Hare Krishna, Krishna. Is everyone? Ojaswini from Russia, not raising hand. Vani Seva from Russia, not raising hand. All Russian devotees, there are quite a few of them. Krishna Nam Dhan. You had to raise your hand, electronic hand, like others are doing, hand, electronic hand. You know how to do it, or do you understand what I'm talking about? Maybe Nikita Prabhu could type it in Russian. Nikita Prabhu. Hare Krishna, Hare Krishna. Hemangi is there again and again. Prakati Leela has appeared. Prakati means Prakat Leela. So you have become Prakat today. I mean, maybe you're there around. I'm taking note of that. Kishore Krishna. Reena Malviya from England. That's nice. Welcome you. Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Okay, some, I don't know whether increase or decrease, but good numbers. Good numbers. Yeah. You also get your family members to join you. Sumitra, right? Sundar Gopal has joined us with his whole family. Get your children to join, neighbors, friends, brothers, spiritual sisters, God brothers, God sisters, but they don't have to be God. It's for everyone. Your spiritual nephews, nieces. It's nice seeing. I'm seeing a lot of hands and I'm not just using mobile. I'm looking at a full screen here. It says 50 participants raised hands. 50. We started with 10, 15 now. We have 50 by now, plus some Russian Prabhus and Mataji. They don't know what's going on here. So they're just sitting around. Okay, so thank you for being with us. Joining us in this session. We'll
like you to chant. You have been asked to chant at least 16 rounds minimum daily. So then they say in English, they say, seeing is believing. So here on this conference, I get to see you chant. Then believe. Yes, yes, you must be chanting. You're chanting right there. Seeing is believing. You understand? Of course, our philosophy is hearing is believing. Seeing is not necessarily what we believe just by seeing. Hearing is believing. If we also hear you, well, either hear you also chanting, then we believe, or we get reports, yes, yes, you write to us, or share your reports. The chanting is going great, Guru Maharaj, or no, I'm struggling. So that kind of hearing or reporting, then we also get to know. And there's another kind of believing, or that's even more reliable believing than seeing and believing. So that's kind of purpose of conducting these sessions. We would also like to see you chanting, and then we believe, or we are convinced, and we are happy. See you chanting. So keep chanting on this conference. It's not going to last forever somehow. Let's see, while I'm here in the Western world for another week or 10 days or so. And anyway, I'm just letting you know that there's a possibility that as World Holy Name Festival is beginning on 17th of this month, just few days from today or from now. So during World Holy Name Festival, we are considering having celebration of World Holy Name Festival on this platform, this forum, this conference. That meant we will have of course, chanting Japa will continue, but we will also have a special talk about the holy name, talk about the glories of the holy name, or maybe some Japa talk or some Japa retreat kind of talk. So we are considering this, some special presentation to glorify the holy name. And with that, we also would be glorifying Srila Prabhupada, the ambassador of the holy name. Srila Prabhupada, the ambassador of the holy name. World Holy Name Festival, we had been celebrating to let the world know who introduced holy name to the Western world.
And that was Srila Prabhupada, 17 September 1965, Prabhupada arrived, and immediately he started showers of bombs of the holy names were being showered on the footpath of New York, or Tompkins Square Park in New York. And so with that, Srila Prabhupada opened a new chapter in the history of the world, or history of America to begin with. And that chanting has caused revolution in consciousness, very individual and collective consciousness of humanity at large. That consciousness is being revolutionized, and unhappy and miserable and distressed people of, yes, Yamang is already nodding, of the Western world and the worldwide, that chanting has made them happy. Even hippies became happies. So one who gave this holy name to them, to the world, those recipients of this holy name, they should be grateful. Thank you, Swamiji, for sharing holy name of the Lord with us. Hari. So we are considering, some special talks like that to glorify the holy name, and with that, we would be glorifying, honoring ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada as well. So, bearing that in mind, maybe you could, I think we'll be making that formal announcement very soon, one of these days. There are not many days, of course, also about that. This World Holy Name Festival time, we will conduct, once I would say appropriate talks, Japa talks, appropriate for the occasion. So you could maybe, again, spreading the word around and bringing some more souls, more devotees to join us. As they say, more the merrier, more the merrier. More devotees, happy devotees. This is also the motto of ISKCON. More devotees, happy devotees. So the chanting makes all the souls become happy. Devotee, who is a devotee? Your body is not devotee. Who is a devotee? Your soul is a devotee. Your soul is a devotee. Not that your hair is a devotee. I don't have hair. Or your nails are devotee. Or not that your nose is devotee. Whatever beautiful or raised nose you have. So body is a dead matter.
living force within us, the soul. Soul is a devotee of Krishna. And Krishna is also soul, right? Krishna is also soul. We call him super soul. He's a big, big soul, super soul. And we are parts and parcels of that soul. So he is a soul, we are also soul. Because we are his, we are like him. Like father, like son. You know the saying? Like father, like son. So, Hari Hari. So keep chanting. Anyway, yeah, we're still talking, I think, of inviting some more souls to join this conference. We get Russian devotees, we get the translators maybe, or some kind of Google translation. Does that come handy? I don't know. As I speak in English, whether that gets translated in Russian and that is on their screen and they just read. Such a technology possible? I don't know. I am not well versed in these matters. Or someone could translate for you, someone from Russia. Nikita, I think Inanukampa was already making that point. Or any other devotees from Czech Republic. If you don't understand everything that I speak, you may. I think devotees from Belgium are okay. I think you speak English. Surya Kanya and company. And Sundar Gopal is a, yeah, I think French devotees. French people don't like to learn any other language. They're very proud of French, and so, but I think our devotees know English, the French devotees. So anyway, so Hare Krishna. So what I had thought of talking, I don't know whether I could talk all that I had thought of talking to you, because we have already invested good amount of time in this introductory talk or different things we did, or announcing possible special sessions here during World Holy Name Festival. So, yesterday we were talking about 6 different items. Seva, the service, and sadhana, the different practices in Krishna consciousness, or someone, the relationships, and like that, swasthya, I should say, swasthya, the health, and 2 more items I will not. Do you remember? Do you even remember how many items we talked about? I'm asking you because you're expected to remember
remind you after the class, after the talks, it is expected from you that you would be revisiting that talk and contemplating and thinking more about it and assimilation, not just gathering information, but what we have heard, we would like to see that the information does the transformation. Should not just sit there, but become our property, assimilated, digested. It is said, anyway, it is said, you are what you eat. But there's another saying that says, you are what you digest. So what we hear, we should try to digest that. And then you become healthy. Huh? When you digest what you have ate, then that gives you nourishment and you become healthy. Or your Atma becomes Mahatma. You Atmas become Mahatma. Of course, we never become Paramatma. Just if you know this. Do not even try becoming Paramatma. We end up becoming only what we are. Once we are the soul, we realize who we are. So, so that's a point also, that what we hear, we should remember before we forget. But if we forget and we don't care that we have forgotten, then you'll be forgetting those items forever. So before we forget, we should be remembering. Hari Hari. So that for that, then Prabhupada used to say, Hari Hari. Write it down. If you want to remember something, write it down. Of course, when we hear, writing is also done in our antahkaran, the subtle body that we have. Mind, intelligence, false ego, and ultimately the soul, the consciousness of the soul. There is a screen, it's called, and Shastra is called Smriti Patal. Smriti Patal. Smriti, the memory, Patal, the screen, or a blackboard. And all that we hear gets written down there on Smriti Patal. As we hear, it is absorbed and is written down there. But we have to, again, reread it by revisiting the talk or what we have heard, and then it becomes fresh and becomes, you remember, and that becomes your property. Hari Hari. Anyway, this is yet another thing I said which I did not want to say, I did not mean to say. And that way, I don't know when I'm going to say what I wanted to say. And that is, let's see whether now we say what I wanted to say. Okay, so we talked about
the swasthya part. Swasthya means health. Taking care of our health. And then we also said there are two kinds of health, or two kinds of, or we are. I did say that. The health of the soul, health of the mind, health of the body. So mainly, health of the soul, that is really the concern. We want to see our Atma becoming Mahatma, Atma becoming nourished, Atma getting the right food and the tonic, and so that we become great souls. Means Mahatma means healthy soul. So that is, of course, there. But the other two parts, the body and the mind. Health of the body, health of the mind. So, health of the body, or health of the body and mind, depends upon intake. What you feed the body, what you feed the mind. So talking of feeding the body, and we feed food and drink to the body. I just want to quickly say that, as I said, you are what you eat. You become fat body or thin body. But it is not just you are what you eat, but also you are, or your body is, when you eat, how much you eat, how you eat, where you eat. Those all 6 of those why, when, where, how, 6 questions. So they're all related with eating. So anyway, I don't want to give another seminar on just that eating topic, or feeding the body. But there's a whole Krishna conscious culture and do's and don'ts associated with eating, which we should be learning and following about the eating, feeding the body. Hari Hari. So we feed food to the body. We feed drinks or water and other drinks, feed them to the body. We also feed air to the body. You know that? No breathing, no living. You die. And there's another thing that we feed,
as we say, food for thought. The thoughts and ideologies and all that we hear and read, this is fed to the mind. Remember yesterday, we did talk, of course. The health of the body, health of the mind has to be always considered, and the health of soul, of course. And I also had said, and I spoke the truth, that the health of the mind is your greater concern than health of the body. Because according to Ayurveda principles, and Ayurveda is Upaveda, means part of Veda. Ayurveda is part of Veda. And Vedas speak the truth and give all the guidelines for our well-being. So according to Ayurveda, what first gets sick is our mind. Sickness enters the mind, and the next sickness is manifested in our bodies, from subtle to gross. The subtle sickness in the mind, and the mind influences the body. Or kapha, pitta, vayu. I'm not going to translate this here. So this is imbalanced. The mind causes the imbalance between, or in kapha, pitta, vayu. And with that, our body becomes sick, unhealthy. And we can't function. And really, anyway, I'll not say more. And that. So talking of eating, we eat, well, I mean, normally, a normal human beings eat, say, 2 or 3 times a day. So that's eating. When it comes to drinking, say drinking water, we do that 5 to 10 times a day. And when it comes to breathing, I think we do something like 17, 18 times per minute. That's what I was taught in the primary school. You could check, maybe stopwatch, and you could count. Maybe some little more or less, but that's the. And then when it comes to thinking, which is a function of the mind, how many times we think? Sankalp, vikalp in Sanskrit it says. We think of something, we reject something. We think of something, we reject something. But sankalp, vikalp. And this goes on and on and on. Even while we are asleep, mind is still functioning and we are dreaming. Okay, now I want to bring your attention to the food
If it is not right food, that makes you sick. But what makes you more sick is the drink or the water. And what makes you more sick is the air that you breathe in and out. And what makes you most sick is what you think, what you hear, what you read. This makes you, the most of the sickness is because of what we think. You see the order? The food makes you sick if it is not the right kind, right one. Water makes you more sick than food. Air makes you more sick than food and water. And thoughts, reading, hearing, sound makes you most sick, more than food, more than drink, more than air. So, Adiri. So from this, you should understand, of course, you have to be wise in selection of the food and selection of the water and the air, and certainly you have to be real wise man in selecting the thoughts which come in, float in. You end up hearing, reading, talking and hearing goes on, and the internet is on and on and on. Social media is breaking the news day and night. So in this age of Kali, our food is polluted. Talking of what Sukdev Goswami said, or reminding you, I think we did say that a few days ago. Kalir dosha nidhi rajan, right? Kalir dosha nidhi rajan. Things in the age of Kali they're flaw, they're faulty, they're defective, they're polluted. I think these are enough adjectives. More could be used for adjectives, understand? To describe the object, we use adjectives. So all these items are everything. Kalir doshan is hey rajan. Everything is faulty, has shortcomings. So the food is polluted. Quickly say it is full of chemicals because the plants are fed chemical fertilizers. So what they eat on what plants digest. And from that there's a fruit or leaves and we eat, and we end up eating pollution, chemicals, and we get sick. Anyway, I think you are intelligent enough to grasp these things. I don't have to go that slow. And there's water pollution. Either water is not available at all, that's another thing. Because, anyway, whatever. And there's the air pollution. And there's another pollution
noise pollution. Noise. This world is noisy, full of noise. All that we hear, read, through all sorts of medium or media. Huh? Media is a plural of medium. I mean, just medium is one, but media is many, many mediums is media, media. So the present day media is a mad media. All mad ideas, bad ideas are broadcasted, and the world is full of noise. And where does, so of all these pollutions, food pollution, water pollution, air pollution, noise pollution is the worst one. The killer number one. Is a noise pollution. Meaning sound pollution. Shabdaha ke, Lord said in Bhagavad Gita. Shabdaha means sound. Ke means come, sky. In the sky, in Sanskrit, when you want to say in the sky, then you say K. Come becomes K. In the sky, there's a sound. And that sound has been polluted. And so that sound is bombarding us day and night and polluting our minds. As a result, whole world is under big, heavy pressure, distress, and depression. We're getting depressed, compressed. I'm back. Are you hearing me? Show of hand, yes? Are you hearing me okay? All right. Even from Russia now, we saw some hands up. So, internet stopped just at the juncture, at the climax point. So, I was saying that the Krishna consciousness movement, or Bhagavad Dharma, which is everybody's dharma. And that's another topic. As I said, it's everybody's dharma, then I would like to explain how it is everybody's dharma, every soul's dharma. And there is no other dharma but Jaiva Dharma. Bhagavad Dharma is a dharma, the religion of all the souls. And that dharma has solution to problems of every single body, every body. It doesn't matter where are you from. Okay, that's enough. So I told you what the problem is. The problem is, a lot of time we don't know what the problem is. That's the problem. You understood, Sundar Gopal, what I just said?
The problem is with this world that they don't know what the problem is. Hari Hari. So I was sharing you what is the problem with this world, just in case you did not know what the problem is. And that's the case, and we do not know. So, so solution is there. Our worst problem is caused by polluted sound. Right? The media, we said, sound pollution. That's noise. When the sound is polluted, we call that as noise. It's noise. So noise pollution, which means everyone is talking. Freedom of speech, everyone is talking. Everyone is a philosopher, thinker, and individualism. In this ism, that ism, capitalism, communism, Gandhism, Leninism, this ism, his ism, her ism. Now, how many isms are in existence? As many human beings are on the planet, those many isms are in existence. I think, according to me, it's me, according to. So many folks everybody's talking nonsense, thinking, I know the truth, it's my way, or a highway. So all this nonsense talk and speeches and writings and books, and this is all causing noise pollution. The minds are polluted. That means sound is contaminated. And this is where the Hare Krishnas come into the picture, or even Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare comes into the picture. This is where the sound of Vedas, sound of Vedas, sound of Gita, song of Bhagavad Gita, or Bhagavatam, Puranam Brahma Samhitam, Bhagavatam Nama, Puranam Brahma Samhitam, Bhagavatam comes in the picture. And this is where the books are the basis, and distribute books also come into the picture. Of course, before that, read books. Chant Hare Krishna, chant Hare Krishna. It comes into the picture. So the noise of this world, or sounds vibrated in this world, are defeated by these powerful spiritual sounds. They're crushed. And the spiritual sound predominates. A spiritual sound becomes victorious. Okay? Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. And Chaitanya Mahaprabhu declares victory. Whose victory? Of the Sankirtan movement's victory is guaranteed by Gauranga. So Vedanta Sutra says, Sutra means in condensed form, something codified language. It's called Sutra. So one Vedanta Sutra is Anavritti Shabdat.
What is the sutra? Anavritti Shabda. Means no, and avritti means repetition. No more repetition of what is being taught here is no more repetition of birth and death. This is possible by what? Shabdat, by the sound. By spiritual sound, transcendental sound, sound of the holy names of the Lord, or sounds of the qualities, the pastimes, abode, and the devotees of the Lord, sound that talks about all these subject matters. This is, Vedas are full of that. Hari sarvatra giyate. Hari's glories are chanted. Ado, Madhye, Ante, beginning, middle, end. This is Puranam Brahma Sammitam. Puran, Bhagavad Mahapuran is Brahma Sammitam. Para Brahma Sammitam is full of Para Brahma everywhere. So Anavritti Shabdat. You could stop this repetition of birth and death by Shabda. Shabda. In the beginning, there was a word. I think in Bible, Christians say, in the beginning, there was a word. And word was with God. And then that word was shared or handed down. So the Shabda, the spiritual sound, is a solution to all our problems. And what the problem is? Birth, death, old age, disease is a problem. And sound vibration is a solution. Or talking of the body is sick, mind is sick, soul is sick, then Ami bina bandhu ke ache tomar. Gauranga Mahaprabhu said, who else is there? Who is your friend or real friend? I'm the one. And what does friend do? Friend in need is friend indeed. Friend in need, when we are in need of something, then the test of who is a real friend, false friend. So then we get to know. So Gauranga, so we need help. And then Gauranga comes, so Lord comes as Gauranga, and he says, I have brought medicine. In one of the songs of Bhaktivinoda Thakur, the holy name is Aushadhi, Maha Aushadhi. So this is a medicine, this is a cure for our diseased condition, the holy name of the Lord. So propaganda, Prabhupada is the propaganda. We do the propaganda of this facts, this truth we propagate. And for that we chant, not just ourselves, that also we have to do. Charity begins at home, as it says. We chant ourselves, do japa, but then we also go out with mridanga and kartal and chant and dance everywhere for the benefit of the whole world.
as devotees had started doing that, they were chanting on the streets of Paris or New York, or later on in Moscow, Australia, here, there. Then we became known as, oh, these are Hare Krishna people. These are Hare Krishna people. They always chant and dance, chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And the movement started with chanting on the streets all day. Devotees would be out there chanting. And then soon, Srila Prabhupada's books were being published, one volume after the other one, another one. And then distribution of Srila Prabhupada's books program got going, which has a packed, the sound is packed in those books. And then we have prasad also, which we distribute. We call them ISKCON bullets, gulab jamuns. We kill the enemy. We kill the enemy by these bullets. Enemy within us. The enemies of, anyway, I don't want to open another topic because we are at the end of our time and talk. So our enemies, but still I want to say something. Yeah, our enemies are Ukraine is not enemy of Russians, and Pakistan is not enemy of Indians, and likewise there are enemies and friends all over the planet. But the enemy of humanity, individually and collectively, are 6 in number: Kam, Krodh, Mad, Moha, Lobh, Matsarya. I will not translate those 6 terms. You're expected to know the meaning of each one of them. These are the enemies. And where do they reside, these enemies? I will give the answer. They reside in the mind. They reside in the mind. As what is the function of mind? Thinking, feeling, willing. So these enemies, Kam, Krodh, Mad, Moha, Lobh, they make us think in a certain way. Lust, anger, greed, thinking. Mind is thinking. Or Kam, the lust, Mr. Lust, Prabhupada said, Mr. Lust. And he has a younger brother called Mr. Anger. Kamat krodho vijayat, from anger. From the lust comes anger, when lust is not fulfilled. So from this thinking caused by these enemies, then there are feelings. Thinking, feeling. The feeling. Within us there's a feeling. And from that feeling comes willing. Thinking, feeling, willing. Will. I will do it. I will.
And when that will becomes strong and solidified, then there's a saying, where there is will, there is what? There's a way. Where there's a will, there is a way. So when our will is very strong to enjoy something or to get something, get someone, get that enemy, get this. When the will is strong, there's nothing could stop you. You will find the way. The intelligence will cooperate with you and give you lots of ideas, and you will end up getting what you wanted. Hari Hari. Atakkena prayukto yam papam charati purushaha. What is that? I'm supposed to be stopping. But Arjuna had asked this question at the end of the 3rd chapter of Bhagavad Gita. What is that? You know, Anichanapi varshnaya baladiva niyojitaha. Even if I think this is not the right thing to do, papam charati purusha, one ends up committing sin. So what is it? Who is it? Who's causing this, the activity of sin or bad things that one ends up doing? An answer to this question, Krishna has said, again in same chapter, 3rd chapter, Kama esha, Krodha esha, Rajo guna samudbhavaha, vidhi enam hi vairinam. Oh, that is, first of all, Lord said, not first of all, but there in same breath, that, oh, that the enemy is causing this, making you the cause of that wrong action, sinful act. Who is the enemy? Kama esha, kam, the lust. Krodha esha, and others, other 4. So these are the enemies. Hari Hari. They're in the mind. So Hare Krishna. I think I'll just stop somewhere. I had to stop. I think you got the point. I hope. So, okay. So we stop here, or you have anybody has any quick comment or question? I can't unmute myself with anyone else. If he's able to unmute me. Haribal, call him. You know how to do it. So 2 hands were up for some time. So okay. So we are unmuting. Okay, Sriji. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my most humble obeisances. Actually, I didn't have any question, but the hand was up because from today, we had all the hands up. It is a nice opportunity for me to No problem. thank you for educating us, say something. for the wonderful class, and thank you for giving us the possibility to have darshan of you and Shandwadi. Hare Krishna.
We have Maha Harinam on Saturday in Frankfurt. Hare Krishna. She said she will do Harinam on Saturday in Frankfurt, Gurudev. Good. Everyone else also should plan Harinam in their respective countries and colonies or on the streets. Welcome. Thank you. Hare Krishna. Prabhupada Jivan Prabhu, please go ahead. Prabhupada Jivan Prabhu. Okay. Speak. Yeah, you speak, Prabhupada Jivan. Unmute yourself, like you had done it 2 days ago. He says he's muted. Raise your hand. Okay, now it's Yeah. No. for the opportunity. My question is, yesterday you start to explaining for me, Guru Maharaj, beat the mind. Can you tell me a little bit more? How can we beat the mind? How can we defeat it? Because mind can be so strong, so heavy, and all of these anarthas in the mind, as you explained. Can you give me some weapons and armors? How can we fight against the mind and how can we defeat it? Or just explain a little bit, please. Yeah. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur used to say, beat the mind in the morning with a broom, broom, and beat the mind during the day or in the evening with the shoes. Ask to unmute. So this is the famous Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur advice or recommendation. Well, still we may not understand how we could use the broom and the shoe to beat the mind. Mind is so subtle, and who knows where is the mind that yeah, so this beating has to be done, or word also used is subduing the mind. Mm-hmm. And that is done with the help of intelligence. Superior to the senses is the mind, and superior to the mind is intelligence, and soul is superior to the intelligence, and super soul is superior to the soul. So this is a hierarchy. So beating the mind is preaching to the mind, talking to you rascal, you. So this is done with the intelligence. And if you don't have it, we could borrow others' intelligence. Let our superiors, seniors preach to us. So that we do not repeat the same fault again, or Krishna also says that
yeah, what about if we don't have intelligence? I said, borrow it. Or as we read Prabhupada's books, or as we hear the talks that we are doing right now, right here, we get to hear some intelligent ideas. Oh, that makes sense. Now I know what to do. So you get some intelligent ideas and then you apply them to control the mind, rectify the mind, purify the mind, and like that. The best thing is if we could begin preaching to ourselves. Huh? Of course, our gurus preach to us, our counselors preach to us, our superiors, our temple authorities may be preaching to us. But if we could come to the point or to the level of preaching to ourselves, and meaning finding fault with ourselves, not finding, not that it is not there and you find. It is there, but you identify, yeah, this is my fault, this is wrong, this is wrong, this is right. Now this is the power of discrimination. The function of the intelligence is power of discrimination. This is good, this is bad, this is spiritual, this is material, this is pious, this is sinful, this is Maya, this is Krishna. Who tells? Intelligence. This is a function of the intelligence. So if we could be intelligent enough ourselves to point out the flaws and defects in our whatever lifestyle or different things that we do, we should be preaching to ourselves. That's the best. Or come to that point that we are able to find flaw in us, ourselves, before others point out that to us. And that intelligence preach to you. Let intelligence blast you or beat you, chastise you. Or we say, get on your case, we say. Let intelligence do that. So Krishna has promised in Bhagavad Gita, Dadami Buddhi Yogam, I give intelligence. In 10th chapter, Dadami Buddhi Yogam, 10th chapter. So how do you get intelligence? Lord also has said, those who Tesham Satadayuktanam Vajatam Priti Purvakam, those who are serving me all the time without any material motivation, to them I give intelligence. Such candidate, as we were explaining, a good sadhaka, good practitioner, he's doing his seva, his sadhana, this, that, all the time, taking care of. Then Lord gives him intelligence. He is very much with you. And that's why he's called Chaitya Guru also. And he's available. So we should begin listening to Lord in the heart. And he gives us intelligence, and then an intelligence is a driver. And we are on a journey. And the most important role during the journey is that of a pilot in a plane or a
driver in a vehicle, or like that, as a function of the role of intelligence. So be intelligent. Is okay? I think it should be okay. Any Arjun? Okay, you should be asking question to Krishna. You're Arjun. Okay. Speak. You're going to speak in Ukrainian. Unmute him. He needs to That's put what his hand, otherwise we have to search for him. Arjun is there. I have a big screen here. I'm seeing. They asked to unmute. Okay, I've asked him to unmute. Okay. Gurudev, thank you very Yeah. much. Please tell me, what can I develop power my intelligence? Well, I said that just now. You hear Krishna. You read Bhagavad Gita. You're Arjun. Your name is Arjun. You could hear Krishna, and your intelligence will develop, and you'll become intelligent. Well, you hear, you read, as you are hearing now. Also, we are asked to do the hearing all the time, or as you chant Hare Krishna. Only intelligent person chants Hare Krishna, according to Bhagavatam. Yagyai sankirtana prayai yajanti hi sumedhasaha. In the age of Kali, intelligent people will perform yagya called Sankirtan Yagya. Sankirtan Yagya yajanti hi sumedhasaha. Su means good, and medhasa means intelligence. Those with a fertile brain, intelligent people, will perform Sankirtan Yagya. So if you go on and on with Sankirtan Yagya, then you will remain intelligent or become even more intelligent, develop your intelligence. In association of devotees, we become intelligent. And I also said earlier, you could also, if you don't have intelligence enough, under some circumstances, then you should consult another senior devotee, use his intelligence for operating your life, for functions that you are doing. So like that. Is it okay? Thank you very much. Hare Krishna. Thank you, Gurudev. Okay, so Dinanakampa. Gurudev. Hare Krishna, Gurudev, humble obeisances, Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna, dear Vaishnavas. Thank you so much, Gurudev. I think Nikita Prabhu has summed it up very well. He says, thank you for the best organic food for our minds and our souls. And that's what there's a lot of food for thought today. And following up on what Gurudev said yesterday, I just want... They could also type quickly if they want to make any comment, or... They have been, Guru. They have been. Okay, so you want to read some of those worth noting comments?
let's see. There's a lot. There's a report on World Holy Name and the programs that they are doing for the World Holy Name Festival. From who? From Mauritius, we have, wow, Shama Manjari Mataji. They are doing Maha Harinam Sankirtan in the village of Plainda Papayes, I think. Mauritius, special occasion for World Holy Name. Mataji from Swindon, England. They are also doing a Harinam. And a lot of devotees are expressing their gratitude for the Japa talks that Gurudev is giving, a lot of food for thought, for giving us shelter, always inspiring us, transcendental Japa talks that nourish our soul, very inspiring to chant live with you and the devotees. Yeah, Gurudev, so that's the general mood. Shriji Mataji says in Germany, vegetables and fruits have no seeds. Is that good or bad? Sometimes good, sometimes not. Shriji Mataji, you want to answer? No. Yes. The fruit that Shukdev Goswami ate, which is a Bhagavatam, it is also seedless. No skin outside, no seed inside. It is just nectar. Inside, outside. Germany has such fruits. Transcendental. Sounds transcendental, because most of the fruits in this world have seeds, but Germany has some transcendental fruits. Progress, making They progress. cannot be reproduced, Maharaj. Uh, They cannot reproduce the fruits. right, that's a defect. Good to have seeds, then could plant those seeds, sow the seeds, and more trees and more fruits. Anyway, okay, what else? So Gurudev, Sundar Gopal, where is Gaurangi and where is everyone else? I mean, from around you, could inform them. We did, Yeah, Guru Maharaj. I see the name of Gaurangi on the screen. Oh, you do. Gaurangi could talk if she is still around or hearing us. Yeah, likewise. No. Oh, she is here. She is here. I'm asking her to unmute. She's here. waving. She's not talking. This is amazing. Gaurangi is not talking. Unmute yourself, Gaurangi Mataji. There we are. If she would show up her electronic hand, then I should be able to see her. But I don't see her, so. I'm just going to pin her quickly. And likewise, I'm just any other can see other devotees from your community, also from Czech Republic, more devotees, Padayatra devotees, Varnashram farm devotees, or just see who is not there from your country, from your town. From Radhadesh, more devotees. From here, there. And from Russia, some more devotees would like to see. So they had been complaining
oh, Maharaj is doing the japa sessions in India only, and that time doesn't suit us. But I'm doing in your courtyard, the japa and talk. So we've let others know. Okay, I think we will wind up here. Okay, just leaving you with 3 reminders. Number 1, same time, same place tomorrow morning. Please spread the word. Visible sadhana means starting your video when you join. And let's make Gurudev happy. As soon as the japa talk starts, let's raise our electronic hand and show Gurudev how many are here. Thank you so much once again. I did see Gaurangi. Oh, Gurudev did. Yes, I did pin her, Gurudev. Trying to speak, but I... Very well. I received your mail. I read it. Maybe we could talk sometimes as you want. Okay, we'll. Happy to see you and receive your email. I can't hear. You don't know how to communicate by unmuting yourself and he's Gaurangi cut. You know. She's trying to speak. Okay, but not working. So I think maybe another day. Be good. So thank you, everyone. Vanchakalpatarubhasya kripa sindhubhaya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananda Koti Vaishnavinda Kire Shila Prabhupada Kire Shila Gurudev Kire. Hare Krishna. See you tomorrow.